employment, growth, economy, inflation, health, environment, pollution, उसकी तो बात होती नहीं है। बात होती है हिंदू टेंपल की, बात होती है राम भगवान की। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। आम चुनाव 2024 के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष ने तैयारियां शुरू कर दी है। अभी विपक्षी गठबंधन इंडी की हुई बैठक में तय किया गया था कि 20 दिन में सीट शेयरिंग कर लिया जाए ताकि मैदान में कूद सके। उधर 5 राज्यों में से 3 हिंदी पट्टी के राज्यों को जीतने के बाद बीजेपी और एनडीए का मनोबल काफ़ी हाई है, जोश हाई है। इसी बीच अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तारीख आई और वो तारीख है 22 जनवरी, जिसके लिए पूरी तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका उद्घाटन करेंगे और उसके साथ ही राम मंदिर आम लोगों के लिए खुल जाएगा। पूरा देश राममय बनाने की तैयारी है। कांग्रेस व विपक्ष ये बात पचा नहीं पा रही। कांग्रेस के बड़े नेता हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस ओवरसीज विंग के चेयरमैन हैं सैम पित्रोदा। उन्होंने बड़ा सवाल उठाया है और कहा है कि देश को मंदिर या किसी की आस्था एजेंडे में नहीं चाहिए, देश को चाहिए रोजगार। बात उस पर होनी चाहिए। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। जी, आई एम स्पीकिंग फॉर एवरी सिटीजन whose vote matters, whose vote is valuable, should be handled properly, and you should give me confidence and trust as election commission because you are independent. And if you don't do, Supreme Court should intervene. That's one. Two, as a political person, I would request my party to take this very seriously. I would request all the alliance members to pay much more attention to this than you have paid. It is not a simple issue. Don't overlook it, because 2024 election is going to decide the destiny of a nation. It is going to decide the path that India takes in the future. And I'm worried about it. I'm worried about it because I see too much importance given to religion. I see that democracy is being undermined. When Prime Minister of a country for 10 years does not give a press conference, that bothers me. When everyone thinks that everything good that happens in the country is only because of Prime Minister, that bothers me. When Prime Minister has no problem giving name to a national stadium on his own name while he's alive, that bothers me. So there are signals I'm getting which says we are on wrong direction. When nation is all involved in Ram temple, Ram Mandir, Diya Jalao, okay, that bothers me. To me, religion is a personal thing. Don't confuse it with national agenda. National agenda should focus on education, employment, growth, economy, inflation, health, environment, pollution. उसकी तो बात होती नहीं है। बात होती है हिंदू टेंपल की, बात होती है राम भगवान की। This is not how you build a modern nation. We have seen that the nations based on religion, whether it is Israel or Pakistan, are very different from nations built on democracy, freedom, human rights, diversity, inclusion, like America. That's what we want. Our founding fathers very clearly articulated, understood, and put it in our constitution that everybody is equal. I don't care what religion you practice. I have to respect you for who you are and not what religion you follow. I'm not going to dictate what you eat, what you pray,
that's your personal freedom. And when the entire nation is hung up on Ram Temple and Janmabhoomi and all this stuff, it really upsets me, bothers me. Okay. I said, my wife is very religious. I'm not a religious person. She has a little temple at home. Fine. She's entitled to do that. But don't get me involved. Okay. I'm not a religious person. That doesn't mean I don't agree with what she does. That's her privilege. I used to say earlier that I have outsourced my religion to my mother and my wife. They are doing a great job. I don't interfere. So religion is something very personal. Don't nationalize it. Don't use for political gains. If Prime Minister is spending time in temples all the time, it bothers me. I would rather have him go to schools and libraries and scientific institutions and not visit lots of temples. Yeah. But that's my view. People have to decide how they feel about it. वो कहते हैं कि एक आम नागरिक के रूप में मुझे ये कहने का हक है, सोचने का हक है कि देश को क्या चाहिए, राजनीति का एजेंडा, चुनाव का एजेंडा क्या होना चाहिए, कितने लोग को रोजगार मिला, महंगाई कितनी कम हुई, देश की आर्थिक विकास की दर क्या है, वगैरह वगैरह, स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, शिक्षा की क्या स्थिति है। लेकिन जिस तरीके से धर्म, मंदिर को एजेंडे में लाया जा रहा है, उससे वो चिंतित है। हिंदू राष्ट्र की बात आती है, राहुल गांधी की बात आती है, उस पर भी वो अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। अब इसको लेकर के सोशल मीडिया में बवाल मचा हुआ है, ट्रेंड कर रहे हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर कीजिएगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।